Welcome back. We're seeing the Kisan Agitation 2.0. Farmers from Haryana and Punjab want to march to Delhi to lay siege to the national capital. They have a list of demands they want to make of the central government. One of them is that there should be an MSP guarantee law that needs to be brought in by the government. They want several other demands that have to be met as well. The government has agreed after meeting yesterday on some of those things like withdrawal of cases. But all of our demands are non-negotiable is what these farmers say. Until then, we will continue this march. Unfortunately, these protests turned out of hand. They got extremely ugly where tear gas shelling had to be resorted to. There were barricades that were broken. There was complete lawlessness that was witnessed at the border of Punjab and Haryana. Take a look at some of these reports. And CNN News 18 is getting you those from the midst of the action when that unfolded a couple of hours ago. Take a look. कोशिश की जा रही है और ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗगन ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ लगातार एक तो बाद एक कई बार इस समय यहाँ पर जो टीयर गैस का इस्तेमाल वो किया जा चुका है और लगातार उस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है भीड़ आप कह सकते हैं कि 200-300 मीटर पीछे इस समय हो चुकी है एक बार फिर से भीड़ आगे जाने की कोशिश करती है और एक बार फिर से जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो कर दिया जाता है मैं कोशिश करूंगा कि टॉप एंगल से आपको तस्वीरें जरूर दिखा पाऊं और कोशिश एक लिमिट तक होगी आपको बता दें कि काफी आगे अगर मैं जाऊं तो वहां पर टीयर गैस का इतना ज्यादा इस समय भी असर है क्योंकि लगातार बैक टू बैक बहुत सारे राउंड वहां पर टीयर गैस के नजर आए हैं एक बार आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई थी उसके बाद ये टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और एक बार फिर से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल देखिए यहां पर एक बार फिर से स्थिति भगदड़ वाली मचती हुई और भगदड़ वाली स्थिति बनती हुई शंभू बॉर्डर के ऊपर इस समय टीयर गैस का इस्तेमाल एक बार फिर से किया गया है और इस बार जो दिल्ली की तरफ से आने वाला रास्ता है उसके ऊपर ये टीयर गैस छोड़ी गई है भीड़ इकट्ठी होती है तो उसके बाद टीयर गैस अजय अगर थोड़ा हम पीछे हो पाए टीयर गैस काफी दूर तक इस बार फेंकी जा रही है काफी दूर तक टीयर गैस का असर प्रभाव हमें नजर आ सकता है और तस्वीरें अपने दर्शकों तक लाइव एक्सक्लूसिव इस समय तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ इस समय माहौल है यहाँ पर टीयर गैस का एक बार फिर से राउंड और एक बार फिर से इस्तेमाल और उसकी वजह से यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं Anshul, my colleague, now joining us live from the Singhu border. Anshul, up until now, the Delhi borders have been sealed. There has been no drama that we've seen since this morning, but inconvenience has been caused. Traffic has been piling up on all of these borders. What's the situation like there now? So yes, the situation at this point on the ground, I'll just try and show you in the visuals over here. The entire road has been barricaded. It has absolutely been blocked with rock concretes that have been put up over here. Just a few minutes ago, Special CP Law and Order of Delhi, Ravindra Yadav, has just reached on the spot. I'll just try and show you in the visuals over here. He's taking track of the preparations that have been put up over here because yes, Haryana police is putting up a fight, but Delhi police also expects that fight is not going to last for a long time, and hence preparations are being made over here to make sure that the law and order situation out here in the national capital remains under control. Just a few moments ago, announcements were made by the Special CP to the security forces that have been deployed over here, saying that each and every security personnel should actually have ample amount of tear gas shells because these tear gas shells are going to be the line of defense for the Delhi police, and if required, lathi charge should also be done. They say that farmers would be coming over here with a lot of anger and would be coming over here with a lot of energy as well, and hence the Delhi police should match that energy and make sure that they are not allowed to enter the national capital in any way or any manner, because if at all they find a way to cross these barricades, then they would be able to enter the national capital and yet again
controlling the law and order situation in the national capital would be a very, very uphill task, and hence they say that farmers should be stopped over here, and the police should make sure that they get tired and sit over here. Once they sit over here, that is fine. They will then negotiate with the government, and that is something that the police is expecting at this point in time. But yes, making sure that they do not enter the national capital is something that is of utmost priority for the top officials of the Delhi police, who are now on the ground making sure that all the arrangements that have been made over here, these arrangements are in place. Remember, this is just the second layer of barricading. Apart from this, there are several layers of barricading that have already been put in place. Concrete barricades have been put in place, normal barricades with barbed wires on top, oil, etc., etc. Each and every, even the last trick in the book has now been deployed on the ground out here at this national highway, making sure that farmers are not allowed to enter the national capital in any way or any manner. The police will allow them to sit down here, sit on a dharna, and then negotiate with the government is what the police is looking at this point in time. But when will that happen? That is something that remains to be seen, because Shambhu border has still not been breached by the farmers. The Haryana police is putting up a fight, making sure that they stay within the limits of Punjab. But once they breach the Shambhu border, then it is going to be a very uphill task for the Delhi police to manage those farmers out here right on the borders of the national capital. Absolutely, which is why no stone is left unturned. All sorts of precautions have been taken, not just at the Singhu border where Anshul is reporting from, but at all the other borders that encircle the national capital as well. We cannot have a situation like we did 3 years ago, is something that the Delhi police, the central government, is extremely clear about. But politics over this is erupting. We've seen Congress leaders now make a pitch of what changes they'll make or what demands will be met of the farmers if they are voted to power in 2024. They have been slamming the central government despite the number of outreaches that have been made, despite the number of meetings that have been held by Union Minister and the delegation with these protesting farmers. Unfortunately, these farmers have rejected all possible solutions or a middle ground that was offered to them. But listen in to what the Congress now seems to be promising to these farmers. किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। हमारे पार्टी की ओर से एक गारंटी देना चाहता हूं। पहली गारंटी छत्तीसगढ़ से शुरू होगी। राहुल जी ये मुझे कहे हैं कि ये गारंटी लोगों के लिए कहना जरूरी है। कौन सी गारंटी? कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी। ये पहली गारंटी है।